So today we are going to discuss with drawing and reading of pie diagram. Pie diagram is a presentation of data using circle. The data which is given to us will write that data in different sector of a circle, and that information considered as pie diagram. For drawing and reading of pie diagram, we use three ratio. In that the first one is theta upon 360. यही हमने इसलिए लिया है because 360 is the total angle of a circle and theta is the angle of a sector which is some part of a circle. Sector circle का थोड़ा सा part होता है. So theta upon 360. Second one is data upon total data, like marks upon total marks. Next, percent upon 100, like 70%. So 70% we are writing as 70 upon 100. So this three ratio we use for drawing as well as for reading of a pie diagram. So let's start with the first. Now first we discuss with the drawing of pie diagram. Let's start from exercise 6.6 question number 1. The age group and the number of person who donated blood in a blood donation camp is given. We have to draw its pie diagram and the data is given. Groups are given in terms of age and number of person is our data. We have to draw for this data. We have to draw this information by using pie diagram. So whenever we are drawing pie diagram, we have to prepare a table in which we will find out central angle. Because आपको जब सर्कल को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करना है तो हर एक सेक्टर का आपको सेंट्रल एंगल का ज़रूरत पड़ेगा. Therefore, whenever you are drawing pie diagram, we require central angle. So for finding central angle, prepare a table of three columns. In first column we'll write on group, which is age group, and in second column we'll write on data, which is number of person, and always find out total of a data. So if we check, total of 80, 60, 35 and 25 gives you 200. Now formula for central angle we'll discuss. So starting में हमने तीन रेशियो डिस्कस किया था. वो तीन रेशियो का यूज करके हम ये तीन फॉर्मूले बना सकते हैं. उस रेशियो का यूज करके हम ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. First is measures of central angle, which is data upon total into 360. Second for data and third for total. But currently we require central angle. So we use first formula, which is central angle is equal to data upon total data multiplied by 360. So now we have data. We already find the total of the data, which is 200. We'll update that values. So the first is 80 upon 200 multiplied by 360. Second is 60 upon 200 multiplied by 360. Third is 35 upon 200 multiplied by 360. And fourth is 25 upon 200 multiplied by 360. So now we updated all the values in our formula of central angle. Intentionally हमने सबको पहले update किया, because if we check in all, 360 and 200 is throughout common. So आप 360 और 200 को कैंसिल कर दो. जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसको कैंसिल नहीं करें. So if we cancel 360 and 200, whatever answer we obtained, we multiply with the data. Like if we cancel 360 and 200 gives you 1.8 multiply by 80 gives you 144. अब आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कैंसिलेशन का, because we know 360 and 200 will cancel, gives you 1.8, multiply with the second data, which is 60 into 1.8 gives you 108. Third is 35 multiplied by 1.8 gives you 63. 25 multiplied by 1.8 gives you 54. And for verification, find a total of all the angles, and it has to be 360. Here we are not writing 360 degree because in calculation we will not write unit. Now we'll start with the drawing of a pie diagram. When we start with the drawing of a pie diagram, first we draw a circle of 5 centimeter. Radius of circle is up to you. You can take 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. But for a reference, we are considering every time a circle of radius 5 centimeter. So now we draw a reference line, which is a reference radius. We place protector in this way and we'll find out 144 degree obtuse angle.
we'll find out 144 joined with the center. Gives you the first sector of 144 degree for age group 20 to 25. Write down the central angle 144 degree. Now again place protector, but now the position of a protector will change and the new position is like this. You'll place protector and you'll find out 108 degree. So after finding 108, joint with center gives you 108 degree, and that is for group 25 to 30. Write down the central angle 108. Now again change the position of protector and the new position is, now find out the third angle is 63 degree joint with center. We have a sector ready and that sector giving information about 30 to 35 and the central angle is 63. Now by default 4 sector remaining. By protector if we measure it is 54 degree for age group 35 to 40 and the central angle is 54. So now we're done with our pie diagram of a given data. Simple it is. थोड़ा प्रैक्टिस करें, 3 मार्क के लिए हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है ड्राइंग ऑफ अ पाई डायग्राम. Let's discuss one more where we discuss how to draw pie diagram one more time. Question number 2. The following data shows the present percentage of demand of a different fruit register with the fruit vendors. Show information using pie chart. Pie diagram को हम कभी कभी pie chart भी बोलते हैं. Data आपके पास given है, that group given in terms of fruits and data given in terms of percentage of demand. We have to draw its pie chart. So for drawing pie chart we require central angle. So we prepare a table of 3 column. In first column we'll write down group, in second column we'll write down data which is given in terms of percentage of demand, और उस data का हम total find करेंगे. So if we check the total of 30, 25, 15, 20 and 10 gives you 100. Now we have to find out central angle. One more time we'll discuss. For finding central angle, out of these 3 we use any. So if we check, the first formula is useful for finding central angle. So जब भी आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करना है तो ड्राइंग ऑफ पाई डायग्राम के लिए 99% टाइम्स यही फॉर्मूला यूज होता है, विच इज सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू डेटा अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. तो फॉर ड्राइंग यू कैन कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला in mind. Let update the value of data, value of total in a formula gives you first answer 30 upon 100 multiplied by 360, then 25 upon 100 multiplied by 360, 15 upon 100 multiplied by 360, 20 upon 100 multiplied by 360 and 10 upon 100 multiplied by 360. After writing this all data, if we check 360 upon 100 is same throughout, so we simplify it. So 360 divided by 100 gives you 3.6. Now we multiply 3.6 with each data. The first one gives you 30 into 3.6 as 108. 25 into 3.6 gives you 90. 15 into 3.6 gives you 54. 20 into 3.6 gives you 72. And 10 into 3.6 gives you 36. So intentionally we are cancelling 360 upon 100 जिससे हमारा calculation time थोड़ा कम हो जाए and become easy for us to find out answer. Now we'll find out total of angle is 360 and it has to be 360. Now I'll start with drawing a pie diagram or a pie chart. Start with the circle of radius 5 centimeter. Draw a reference radius. Place protector on a reference radius. Now find out first angle, obtuse angle, which is 108. After finding 108, joint with center. First sector ready, which giving information about mango, and the angle is 108 degree. Now the position of protector like this. Find out the second angle is 90 degree. Joint with the radius. Joint with the center. Second sector ready, which giving information about fruit apple, and central angle is 90 degree. Now again we place protector, new position on a third radius.
and finding the angle 54 degree. Finding 54 degree joint with the center. Third sector ready, which giving information about sweet lime, and the central angle for sweet lime is 54 degree. Again, place protector on a new radius. The position is like this. Find out the central angle of 72 degree. After finding, join that point with center. A sector is ready, giving information about fruit chiku, and central angle is 72 degree. The large sector remaining is for orange, and the central angle is 36 degree. So don't forget to write down group, don't forget to write down central angle, and बहुत ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं. Make it very simple, gives you the answer of pie chart for a given data. So this become your drawing of a pie diagram. We discussed two questions. It's easy, draw it, practice it, so that it become easy for you to draw pie diagram. Now the next concept we are going to discuss with reading of pie diagram. Reading of pie diagram का मतलब ये होता है कि आपको pie diagram draw नहीं करना है, आपको पाई डायग्राम दिया होगा उसका हेल्प लेके कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है. लाइक द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, द पाई डायग्राम शोज द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर इन अ टाउन. Answer the question with the help of the diagram. So diagram is given, and in the different sector given: construction, production, electricity, agriculture, administration, food, hotel, and the central angle is given accordingly. The first question is, if the total worker is 10,000, then how many of them in the field of construction? मतलब total दिया है, so we'll write on total. Number of worker is 10,000, and construction field की बात कर रहे हैं. तो अगर हम पाई डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड का सेंट्रल एंगल है 72 डिग्री. अब आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का सेंट्रल एंगल पता है, आपको ये फाइंड करना है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर काम कर रहे हैं. सो वी हैव दिस, हमें डेटा फाइंड करना है. अगर आप चेक करेंगे तो थीटा आपके पास है, टोटल आपके पास है, तो वी यूज सेकेंड फॉर्मूला which is for data is equal to theta upon 360 into total. So we'll write down number of workers in a construction field is equal to theta upon 360 multiplied by total. So theta for construction field is 72 upon 360 multiplied by 10,000. Simplifying, 1 0 cancel, and 72 and 36 will cancel, gives you 2. So after simplification gives you answer as number of worker in a construction field is 2000. Done with the data for construction field. Second question, how many worker in the administration? So again same, total remains same, total number of worker is 10,000, तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. What is central angle for administration? So if we check, central angle for administration is 36 degree. Again we have to find out data for administration. तो out of this three we use second formula जिसका हेल्प लेके हम डेटा फाइंड कर सकते हैं. सो डेटा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड which is number of worker in administration field is equal to theta upon 360 multiplied by total. Theta is 36 degree upon 360 multiplied by 10,000. So simple simplification gives you number of worker in a construction field is 1000. Let's discuss one more. What is percentage of worker in production field? So again total remains same, 10,000. Central angle for प्रोडक्शन फील्ड इज 90 डिग्री. बट अब आपको डेटा नहीं फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ डेटा फाइंड करना है. सो थीटा इज इक्वल टू परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 360, या तो परसेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 ऑन टू 100. ये दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला हम डिस्कस यूज़ करेंगे. स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में हमने 3 रेशो लिखे थे, ये फॉर्मूला हमने वो फर्स्ट 3 रेशो में से डिराइव किया है. तो हमें परसेंट फाइंड करना है, थीटा गिवन है, तो वी यूज सेकेंड फॉर्मूला विच इज परसेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वर्कर इन अ कंस्ट्रक्शन फील्ड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने, टोटल नहीं किया है. डेटा फाइंड करना रहता है तो हम मल्टीप्लाई बाय टोटल कर रहे हैं, परसेंट फाइंड कर रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं. दिस इज ओनली अ डिफरेंस.
theta का value is 90 divided by 360 multiply by 100. So simplification gives you 25. So it become 25% of worker work in production field, which become your answer for third question. So pie diagram दिया था हमने, 3 questions के answer ढूंढे. This is called as reading of pie diagram, and it's important to understand how to derive formula. Formula याद नहीं रखना है, डेटा दिया होगा तो ये formula, थीटा फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, टोटल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला. स्टार्टिंग के 3 रेशियो में से आपको एज पर द रिक्वायरमेंट डिराइव द फॉर्मूला. अंडरस्टैंड. लेट डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4. द पाई चार्ट shows annual investment of a family. Answer the question with the help of pie chart. So investment of a family is in immovable property, is in post, is in deposited in bank, mutual fund and shares. So the first question is, if the investment in share, मतलब शेयर में अगर वो फैमिली 2000 इन्वेस्टमेंट कर रही है, so what is the total investment of a family, मतलब अब आपको टोटल फाइंड करना. So as per our data, first we'll find out investment in share is rupees 200 and the central angle for share is 60 degree. So we'll write on both the data. Central angle लिख लिया हमने 60 degree and investment in share we write as 2000 rupees. We have to find out total. So again we have a formula. एक central angle के लिए है, second data के लिए है, third वाला total के लिए. So ये हमने हमारे basic 3 रेशो में से derive किया है. हमें total का ज़रूरत है तो we use formula for total as 360 upon theta multiply by data. So total is equal to 360 upon theta multiplied by investment in share, which is equal to 360 upon theta for share is 60 degree multiplied by 2000, which is data for share. So if we simplify 0 0 and 36 and 6 cancel, the total data gives you 12,000 sorry. So that 12,000 become your total investment. So now we have answer for our first question. So discuss what is the next questions are. So हम पहले ही पूरा question read करेंगे तो this is what the questions are. Second question is how much amount deposited in bank, which is data for bank we have to find out. Third, how much more money is invested in immovable property than in mutual fund. मतलब आपको immovable property का भी डेटा फाइंड करना है और म्यूचुअल फंड का भी, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस में कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ. और फोर्थ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट. सो मतलब आपको बाकी जो बचे हुए सेक्टर्स हैं उसके डेटा फाइंड करना है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन words we are preparing table and prepare 3 column. In first column we'll write down sectors, which is share, deposit in bank, म्यूचुअल फंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पोस्ट. उन सब के हमने सेंट्रल एंगल लिख लिए हैं, विच इज गिवन इन द पाई डायग्राम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेटा. सो अगेन वी यूज फॉर्मूला. हमारे पास सेंट्रल एंगल है और डेटा फाइंड करना है, तो सेकेंड फॉर्मूला वी यूज फॉर डेटा, which is theta upon 360 is equal to total. So investment is equal to theta upon 360 multiplied by total. So updating all the values, total is we obtained in our first question, which is 12,000. Theta is given in a pie diagram. Updating answer 60 upon 360 multiplied by 12,000. तो वो ऑलरेडी हमें अपडेटेड था, बट तो भी हमने फॉर्मूले में अपडेट किया है. नेक्स्ट वन इज डिपॉजिटेड इन बैंक 90 upon 360 into 12,000, 60 upon 360 into 12,000, 120 upon 360 into 12,000 and the last is 30 upon 360 into 12,000. तो आप सब में चेक करेंगे तो 12,000 डिवाइड बाई 360 is common. We'll simplify and multiply with the central angle. So first data तो already available है, we directly write as 2,000 एंड सेकेंड डेटा में आप 360 और 12,000 को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर वी ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 90. सो दैट गिव्स यू 3000. अगेन मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइड बाय 360. सो सिंपल कैलकुलेशन है, व्हेन वी डू गिव्स यू आंसर एज 2000, बिकॉज शेयर का और म्यूचुअल फंड का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो कॉमन सेंस है कि डेटा भी सेम आएगा. Next, immovable property, we simplify, gives you answer as 4,000 and simplification for post.
which having the central angle 30 degree, when we'll substitute, gives you answer as 1000. So now we have data for all the sectors. One by one we can write on answer. So question number 2 पूछ रहा था कि how much amount deposited in bank. तो आप बैंक वाले सेक्टर में जाएंगे और आप चेक करेंगे तो we can write our final answer. Amount deposited in bank is 3000 rupees. Next, how much more money is invested in immovable property than in mutual fund. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले रो में आप जाएंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने 4000 खर्चा किया और म्यूचुअल फंड में 2000. कंपैरिजन है तो वी सब्ट्रैक्ट देम. 4000 माइनस 2000 गिव्स यू 2000. तो 2000 rupees more invested in immovable property than in a mutual fund. This is what the answer for question number 3. Question number 4, how much amount invested in post. पोस्ट में हमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है. So we'll write amount invested in post is 1000 rupees. So first read all the question. So depend on that you can write your answers. So this is what answer for all questions of main question number 4. So when data of all the sector given, write that data, write down answer in the form of table. तो लिखने का काम कम हो जाएगा और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. Let's discuss one more question of reading of pi diagram, because reading of pi diagram is also very important. Question comes for 3 to 4 marks in board exam. Let's start. The question is question number 4. Observe the pi diagram. It shows the percentage of vehicle passing through a signal in a town between 8 a.m. to 8 a.m. and 10 a.m. and the data is given in the form of two-wheeler, tempos, bus, ऑटो एंड कार्स. और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सेंट्रल एंगल नहीं परसेंटेज दिया है. सो लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल. हर एक सेक्टर का, हर एक व्हीकल का सेंट्रल एंगल फाइंड करना. सो कॉमन सेंस सबका फाइंड करना है तो वी प्रिपेयर टेबल. पहले वाले में हम लिखेंगे टाइप ऑफ व्हीकल्स, percentage, number of vehicles, and in the last we have to write down central angle. तो central angle का formula we use, जब भी परसेंट दिया होगा तो यही दो फॉर्मूले में से कोई एक हम यूज़ करते हैं, जिस थीटा इज इक्वल टू परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 360, और दूसरा फॉर्मूला है परसेंट के लिए. लेकिन करंटली वी रिक्वायर्ड आंसर फॉर central angle. So we'll write our first formula which is central angle theta is equal to percent upon 100 multiplied by 360. Updating, first percent दिया है 40 upon 100 multiplied by 360. Next is 30 upon 100 multiplied by 360. 10 upon 100 multiplied by 360. 8 upon 100 multiplied by 360 and 12 upon 100 multiplied by 360. So simplifying this, तो सब में 360 upon 100 सेम है, उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. Gives you 3.6 multiplied by 40, gives you the first answer as 144. Next is 30 multiplied by 3.6 gives you 108. 3.6 multiplied by 10 gives you 36. 8 multiplied by 3.6 gives you 28.8 and 12 multiplied by 3.6 gives you 43.2. अगर आप चेक करेंगे तो सम टोटल ऑफ दिस इज 360 डिग्री, बट सिंस वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम तो नो नीड टू राइट डाउन द टोटल. सो दिस बिकम द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. लेट डिस्कस द फर्दर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर इज 1200, मतलब अगर 1200 टू व्हीलर हैं, सो व्हाट इज टोटल ऑफ ऑल द व्हीकल्स, मतलब नंबर ऑफ ऑल द व्हीकल्स, मतलब आपको टोटल फाइंड करना है. सो अगेन वी यूज परसेंटेज ऑफ टू व्हीलर इज 40%. सो वी यूज दिस डेटा अपॉन टोटल डेटा इज इक्वल टू परसेंट अपॉन 100. टोटल फाइंड करना है. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो डेटा इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल डेटा हो जाएगा. तो परसेंट जो टोटल के साथ आ रहा है वो हम डिवाइड कर देंगे. So gives you total. So total के लिए we have formula total is equal to data multiply by 100 divide by percent. So data है 1200
multiply by 100 divide by 40%. तो एक zero cancel, 4 3s are, so 30 multiplied by 100 gives you 3000. So the total number of vehicle is 3000. रीडिंग के दौरान इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट में स्टार्टिंग में जो हमने तीन रेशो यूज़ किया, थीटा अपॉन 360, डेटा अपॉन टोटल, परसेंट अपॉन 100, सो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट वो तीन में से जो भी दो यूज़फुल है वो सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंगली फार्मूला डिराइव करना है। इट बिकम ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट आंसर। कभी भी फार्मूला रट्टा नहीं मारे, समझे, और कौन सा फार्मूला ज़रूरी है वो डिराइव करें और यूज़ करें। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट reading of pi diagram. So with this we completed our all the exercises, all the concept of statistics, which is the part of the 10th standard. So subscribe the channel, and um, in next lecture we'll discuss next chapter. Thank you. So